Last class we did, last topic was rolling on inclined plane. So when any bodies start rolling on the inclined plane, and we derived a general formula that whether a body goes downwards or upwards, in both the cases friction will be acting in upward direction. बट स्लाइडिंग के केस में ऐसा नहीं होता. स्लाइडिंग के केस में नीचे आएंगे तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, एंड व्हेन अ बॉडी इज गोइंग अप फ्रिक्शन विल बी डाउनवर्ड्स. In the case of rolling, when a body is rolling up or rolling down, in both the cases, friction is upward direction. Suppose first case, when the body is rolling downwards, V and omega. So at the contact point, V has to be equal to R omega. We derive the equation. नीचे की तरफ acceleration आ जाता है G sin theta divided by 1 plus I by mr square. When a body is thrown upwards, ऊपर की तरफ velocity होगी V, omega will be in opposite direction, and there will be retardation, and that retardation is also equal to G sin theta divided by 1 plus I by mr square. So when a body comes rolling downwards, its speed increases. When a body goes rolling upwards, its speed decreases, velocity decreases. In both the cases, it will be why friction is acting upward in both the case. पहले केस में देखते हैं. In the first case, mg sin theta नीचे की तरफ लग रहा है. Acceleration से हम directly calculate कर सकते हैं. Because of the acceleration A, velocity will be increasing. When a body is rolling downwards, velocity will be increasing. और रोलिंग की कंडीशन होती है v has to be equal to r times omega. So if v is increasing and body has to maintain the rolling, then omega should also increase. ओमेगा इंक्रीज करने के लिए चाहिए अल्फा, अल्फा के लिए चाहिए टॉर्क, और सेंटर के अबाउट ना तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन टॉर्क दे सकता है और ना ही ग्रेविटी, बिकॉज दे बोथ आर पासिंग टू दी सेंटर. ओनली एंड ओनली फ्रिक्शन कैन प्रोवाइड टॉर्क. सो फ्रिक्शन का टॉर्क उधर ही होना चाहिए जिस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है. सो इट हैज टू बी क्लॉकवाइज ओनली. फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग अपवर्ड्स. Only then it will be able to provide the clockwise torque. Similarly, second case में when a body is rolling up, velocity will be decreasing because of the retardation. Velocity decrease होगी. Velocity decrease होगी तो omega को भी decrease करना है, और decrease करने का मतलब there should be an opposite torque. Omega is anti-clockwise, so torque should be clockwise. Alpha should be retardation. Instead of angular acceleration, angular retardation. So when a body is rolling down or when a body is rolling up, in both the cases, the friction will be acting in upward direction, which is not true for sliding case. When a body comes sliding down the inclined plane, friction is upwards. When a body goes sliding upward, then friction will be downwards. Accordingly, friction will change. Right? And we did a equation of energy conservation for a rolling motion. We did equation of very good equation of एनर्जी कंजर्वेशन. बट एनर्जी कंजर्वेशन में भी कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं. अभी कल ही किसी बच्चे ने डाउट भेजा था. लाइक सपोज this one example. This question has been asked also. Suppose there is a disc and a ring and a sphere of same mass and same solid sphere and ring of same mass and same radius is released from the top. Same mass and same radius is released from the top of the inclined plane. From the top of inclined plane. From the top of smooth inclined plane. So एक तो क्वेश्चन है find the speed, find which will reach the bottom first. That is the first question. Second question is find their velocity on reaching the ground.
on reaching the bottom if the height of center of mass is h. Solid So sphere. logic, beta, Solid sphere. solid sphere. Very good. Why? क्योंकि वो फॉर्मूले में आई की वैल्यू डाल दी. फॉर्मूले में आई की वैल्यू डाल दी. Ahana, what should be the answer? तो सॉलिड स्फीयर ही होगा. Solid sphere भी होगा. Very good. Okay. Yes, that's why this question was asked in the exam. This is a keyword here. This is smooth inclined plane. Smooth inclined plane means there is no friction, there is no rolling. Without friction, it is not possible to roll because there is no torque. Mg sine theta will be the only force. So it is impossible to roll on a smooth inclined surface. They all will be just sliding downwards and acceleration will not be given by this. Acceleration of each of the block will be g sine theta. All reach bottom at same time with the same speed. So as a question, language wise, diagram wise, will try to confuse you. So read the question carefully. All reach bottom with same speed and at the same time. Right? Because it is a smooth surface. So when it reaches the bottom, जब हम इसकी equation लिखेंगे, that will be only half mv square, not it will be only half mv square, not half I omega square, because omega will not be achieved. It will not rotate when it reaches the bottom. It will be just skidding. So it is a ring, sphere, cylinder, doesn't matter. They all will acquire the same speed because there is same loss in gravitational potential energy mgh. Understood? Siddharth? Yes sir. Very good. क्योंकि ये फॉर्मूला हमने फ्रिक्शन फ्रिक्शन है ही नहीं इसमें, तो रोल कर नहीं सकता बिना फ्रिक्शन के. रोलिंग पॉसिबल ही नहीं है इंक्लाइन प्लेन पे. इज रोलिंग पॉसिबल ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट फ्रिक्शन? नहीं. नो सर. पीयूष, No, sir. is it possible to roll on a horizontal surface without friction? Vriti, ये समझ आ गया? लास्ट एग्जांपल, दिस इज क्लियर? Yes, sir. ओके. So ऐसे क्वेश्चंस एक और है, वो भी देख लेते हैं. दिस इज आल्सो एन आस्क्ड क्वेश्चन. दिस इज अ पैराबोला. फर्स्ट हाफ इज रफ, सेकंड हाफ इज स्मूथ. A small disk of radius r is released on the rough surface from rest. This side is rough. Second half of the part is smooth. Find the height up to which the disk or small ball rises. On the smooth portion. So जब ये rough surface पे है, there will be force, friction force acting. Because of friction force, there will be torque, and because of torque, there will be omega. So from A to B, when it reaches the bottom, it is rolling. So V as well as omega both will be there. mgh is loss in gravitational potential energy, and that will be equal to increase in kinetic energy. और kinetic energy में दोनों तरह की energy होगी. Half mv square plus half I omega square as it is under rolling. इसमें हमने फिर किया था हाफ mv square into कॉमन लेके 1 plus I by mr square लिख सकते हैं. That is the general formula is equal to mgh. Suppose on the other side, so I'm writing I so that a general formula we can work. On the other side, it is smooth. Smooth means there will not be any friction. If no friction, N and mg cannot provide torque, cannot provide retardation, angular retardation, and therefore cannot provide
cannot have change in its angular velocity. So इसमें angular velocity जितनी point B पे थी, with the same speed it will be spinning at every point. Angular velocity on the smooth portion will not change. It will not change. Its only kinetic energy will change up to a height of h dash. Right? So from B to C, जो एनर्जी चेंज होगी वो केवल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वाली चेंज होगी. There will not be any change in. There will not be change in any rotational energy because वहां पर कोई friction नहीं है. Friction नहीं है, so it will not be able to move. It will not be able to change omega. Half mv square is mv h dash. पहली वाली इक्वेशन से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हाफ एम पी स्क्वायर की. तो सिंस इट वाज अ स्मॉल डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर. सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन mgh is equal to half mv square into 1 plus 1 by 2 which is 3 by 2. mgh is equal to half mv square into 1 plus 1 by 2 that is 3 by 2. So half mv square is equal to 2 by 3 mgh. We can write 2 by 3 mgh is equal to mg into h dash. So the height up to which it covers is 2 by 3 times h. So the h height से आएगा on the smooth surface, it will be able to rise only up to 2 by 3 h because that surface is smooth. On a smooth surface, no torque, no torsion, no change in angular velocity, and omega will remain same. Right. So that is for the energy conservation. So you have to be a little careful in the cases of rolling, because rolling is only possible on the rough inclined plane. On a smooth surface, it is not possible to roll. Rolling on horizontal surface, अब जब भी किसी surface पर horizontal surface पर rolling हो रही है, so it is possible कि हम बिना friction के भी move कर सकें, but उसके लिए हमें उस body में वो point ढूंढना पड़ता है. So for example, अगर हम किसी body को center पे force लगाते हैं, तो वो आगे की तरफ ट्रांसलेट होगा कांटेक्ट पॉइंट का आगे की तरफ वेलोसिटी, फ्रिक्शन पीछे लगेगा. बट इफ यू अप्लाई फ्रिक्शन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, तो उस टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो फोर्स हमने लगाया उसकी वजह से रोटेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी. पॉइंट पी हैज टेंडेंसी टू रोटेट एंड गो बैकवर्ड्स, देयरफॉर फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो हाउ टू डिसाइड वेदर द फ्रिक्शन इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन, उसके लिए एक जनरल इक्वेशन होती है. वी विल डायरेक्टली यूज दैट जनरल इक्वेशन. Suppose कोई भी बॉडी है, दिस इज अ डिस्क और सिलेंडर और एनीथिंग स्फीयर. इन ऑल द केसेस जब सेंटर पे फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क है नहीं, रोटेशन की कोई टेंडेंसी नहीं होगी. इट विल बी ओनली ट्रांसलेटिंग. द कांटेक्ट पॉइंट विद द ग्राउंड इज आल्सो ट्रांसलेटिंग टुवर्ड्स राइट, फ्रिक्शन विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट. जनरल केस क्या होता है? इफ सपोज फोर्स, ये डायरेक्ट रिजल्ट है जिसको हम यूज कर रहे हैं. इफ सपोज फोर्स इज अप्लाइड h height above the center, if h is greater than k square by r, where k is the radius of gyration, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. h is greater than k square by r, where k is radius of gyration. K is radius of gyration, and which is root of I by m. So अगर h greater than k square by r है, then friction act forward. If h is equal to k square by r, तो friction की जरूरत ही नहीं है. Friction is zero, no friction will be required. And if h is less than k square by r, then friction act backwards.
तो ये 3 कंडीशंस हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं व्हाइल सॉल्विंग ए क्वेश्चन, गेस नहीं करेंगे। सेंटर पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा था क्योंकि सेंटर पे फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली इट हैज टेंडेंसी टू ट्रांसलेट ओनली, और ट्रांसलेट करेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसलेट, फ्रिक्शन विल बी बैकवर्ड, राइट। ओके, तो फॉर एग्जांपल सपोज हम सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं। फॉर अ सॉलिड स्फीयर, a solid sphere, force is applied at 2/3. This is a solid sphere of mass m and radius r, और इसमें फोर्स लगाया हमने लेट्स से r/2 पे, r/2 from the center, solid sphere of mass m radius r. बेटा हर्ष, Yes, sir. what is radius of gyration for a solid sphere? रेडियस ऑफ gyration क्या था? किसी भी बॉडी को एक पॉइंट मास की तरह अज्यूम कर लेते हैं। If you consider a body in the form of point mass, तो उसकी जो रेडियस होगी या उसकी जो डिस्टेंस होगी Yes, sir. एक्सिस से, Distance R पे. that is called radius of gyration. So for a solid sphere it is 2/5 m r square. इसको यहाँ पुट कर दोगे तो 2/5 times r आ जाएगा, राइट। Yes, sir. सो ये k की वैल्यू है, k स्क्वायर रूट 2/5, k स्क्वायर बाय r की वैल्यू कितनी आएगी? 2/5 r. r/2 is greater than 2/5 or less than 2/5? Harsh, r/2 is greater than 2/5 or less than 2/5? r/2 is Sir. greater than 2/5, less than 2/5? Sir, less than. अरे यार क्या करोगे बेटे, ऐसे मत करो यार। r/2 is 0.5, this is 0.4. 0.5 बड़ा होता है ना। हाँ सर, ये तो 0.5 है. r/2 is greater than 2/5 r, इसलिए ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है that h is greater than k square by r. फोर्स लगाया सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे, r/2 हाइट ऊपर की तरफ, जी सर. इसलिए फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ। बस हमें पहली कंडीशन यहाँ से निकालनी है फ्रिक्शन के डायरेक्शन की, जिसमें सबसे ज्यादा लोचा होता है। फ्रिक्शन इज एक्टिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब इसमें एक लीनियर एक्सेलरेशन होगा और एक एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। वी विल राइट दोस 3 इक्वेशंस, एक ट्रांसलेशन के लिए, एक रोटेशन के लिए, और एक कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग। ट्रांसलेशन के लिए f and fr in same direction will be equal to ma. Second is rotation. रोटेशन के लिए टॉर्क चाहिए, सो एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फ्रिक्शन का टॉर्क माइनस Fr इनटू r, दैट इज I टाइम्स अल्फा। I को लिख लेंगे 2/5 mr स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन थी कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग, A इज इक्वल टू r अल्फा। Solve these 3 equations. Correct? इन दोनों को सॉल्व करके हम फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कंडीशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? सेकंड इक्वेशन में I को लिखो 2/5 mr स्क्वायर, और फिर r अल्फा को A एंड देन डिवाइड बाय r। सो अगर हम इसको सॉल्व करें, बेटा यहाँ तक समझ आया? इसमें कोई डाउट? अंशुल? No, sir. No. Okay. F plus Fr is ma, that is the first equation. Second equation थी F into r/2 minus Fr into r is 2/5 mr square अल्फा, और r अल्फा को हम लिख लेते हैं a। सो पहले r कैंसिल, f/2 minus Fr is equal to 2/5 m times r अल्फा।
Add the two equation, FR gone. 3F by 2. This becomes 2 by 5 MA. 3F by 2 is MA plus 2 by 5 MA. 7 by 5. A comes out 15 by 14. F by F. This will be the acceleration. So ऐसे हम किसी भी केस में whether it is moving on a horizontal surface, inclined plane पे तो कोई चांस ही नहीं है, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, friction will be always up. And when a body is rolling on the horizontal surface, then it will be decided by the point of application of force, where the force is applied. Right? Okay. ठीक है. Angular momentum एक और देख लेते हैं. Angular momentum in pure rolling. Angular momentum in pure rolling is again there will be summation of 2. Angular momentum in rolling will be angular momentum due to translation of center of mass plus angular momentum of the whole body about center of mass, because rolling में it is a combination of two motion, translation of center of mass and rotation about center of mass axis. Right? So angular momentum of this rolling, जैसे हम केस लेते हैं एक डिस्क का, डिस्क इज रोटेटिंग रोलिंग ऑन अ सरफेस वेलोसिटी v. तो जब हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे इसका, लेट्स से अबाउट पॉइंट O, सो पूरा का पूरा मास इसके सेंटर पे अज्यूम कर लो. It will be m vcm into r, this is clockwise, plus due to the rotation of whole body, which is I into omega. So angular momentum of this whole body about point O will be equal to mvr plus I omega. Right? Okay. So I omega, अगर ये disk है, suppose for a disk, angular momentum will be mv into r plus disk के लिए half mr square into omega. V को फिर r omega लिख सकते हैं. So mr square omega plus half mr square omega, which is 3 by 2 mr square omega. Fine. So ऐसे हम angular momentum conservation. So this is the rotation motion done. Questions अगर आपने कुछ किए हो, डाउट हो तो भेज देना, we will discuss. Next part is gravitational motion. Gravitational motion. So okay, I'll take 1 2 more questions कुछ ठीक दिख रहा है from the JEE previous year. एक question है, suppose there is a disk which is rotating, which is already rotating. This is a disk of moment of inertia I1. It is rotating with omega naught. Now another disk of moment of inertia I2 falls on it, initially slips, and then finally it starts rotating with the same angular velocity. Moment of inertia is different. It is I1, I2. We have to find initially the second disk falls on the first disk. Initially it slips, and after a certain time it starts rotating with the same speed as the first. We have to find how much is the change, how much is the change in energy, how much energy is lost in the form of heat. How much energy is lost in the form of heat.
So जैसे हम वहां पे कर देते inelastic collision, similarly here also it will be a case of inelastic collision only, considering it to be a system which final momentum become I1, final moment of inertia become I1 plus I2. Angular momentum is I into omega. So I1 omega naught will be I1 plus I2 times omega. We will calculate omega as I1 divided by I1 plus I2 times omega. ये तो हो गया final angular velocity with which when the slipping stop, it will start rotating. This is the final angular velocity of the combined disk. Now we have to calculate loss in energy. Loss in energy will be initial minus 1. This is a question which have been asked. Find the heat, find the energy lost. So energy lost by rotation during the rotation. Loss in energy is always initial minus final. Half I omega square minus. Okay, so it will be half I1 omega naught square minus half I1 plus I2 into omega square. So you can substitute the value and solve for the energy. So it is exactly similar to the perfectly inelastic collision. Perfectly inelastic collision when two bodies stick together and then rotate as a single body. Okay, so another miscellaneous problem, just say one of them is when a body rotates, a moment of inertia calculation when some part is unsymmetrically removed. Unsymmetrically removed का मतलब जैसे we did one case was symmetrically removed. Symmetrically removed case, moment of inertia formula still remains same. Second is suppose moment of inertia calculation when some portion is unsymmetrical. एक बड़ी सी डिस्क थी उसमें साइड में छोटी सी डिस्क कट करके निकाल दी. हमें इस रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. पहले जो हमने किया था वो सेंटर ऑफ मास के लिए था. That we assume whole mass to be positive, then the mass that is removed to be a negative mass and calculate it. Now moment of inertia of this system, this disk about an axis passing through center. Moment of inertia of this about an axis passing through. Passing through center perpendicularly. So what we do is first we assume this has a whole combined mass and then the mass which is removed. But we have to calculate the moment of inertia of this combined mass about the same axis which is I1, and then we subtract the moment of inertia of that combined mass, that removed mass, about the same axis, about the 7 same. mr square by 32. ये मैंने कुछ रेडियस तो दी नहीं यार, तुमने कैसे कैलकुलेट किया? ये मैंने I r did by the- 2 डिस्टेंस मान लिया. अच्छा मान लिया, ठीक है. मैं अभी मेथड समझा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन तो ठीक है कर लेंगे. मेथड ये है कि हम पहले पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे उसके सेंटर के अबाउट. So moment of inertia if the complete disk mass is m1, so it will be m1 r square by 2 where r is the radius of this bigger one. और जिससे मास को हमने यहाँ से रिमूव किया है that disk radius is r by 4. So now what we have to do is we have to find this removed portion and moment of inertia. पहले हम उसका center of mass के about निकालेंगे ICM and then we apply this parallaxis theorem. So ये r by 2 और ये हो गया r by 2. So that becomes 3r by 4. If the mass of this removed disk is m2, then moment of inertia of this removed portion will be calculated by using the parallel axis theorem. I is equal to ICM. ICM आया इसका m2 into r by 4 square by 2 mr square by 2
plus m2 into 3r by 4 whole square. Now I1 is the moment of inertia of this whole disk, I2 is the moment of inertia of that removed disk, and when we subtract I1 minus I2. I will be equal to I1 minus I2 and M1 हम calculate कर लेंगे in terms of the mass density. So M1 is sigma into pi r square because sigma is mass per unit area, and M2 will be sigma into pi r by 4 square. Right? Okay. So now we can start the evaluation. छोड़ दें बाकी सारे concepts questions आपको करने हैं, on your own. Next is gravitation. Gravitation is exactly similar to electrostatics. So हम सारे formulas electrostatics वाले अगर याद है तो gravitation के formula derive कर सकते हैं. Gravitation में पहला होता है first is Kepler's law. Kepler gave the 3 laws of planetary motion. Numerical कम ही आता है इस पे. Kepler's law of planetary motion. First law that all planets revolve in the elliptical orbit with sun present at one of its foci. So any of the two side focus, left side or right side, one will be sun and planets will be revolving on this elliptical path. Second law is Sum of area. law of area, yes. Second law says that the line joining sun to earth, sun to planet covers equal area and equal time interval. So the areal speed of line joining planet to sun is constant. Day by dt is the line joining sun to planet covers equal area and equal time interval. हाँ हाँ बेटा, सर ये सेकेंड लॉ सर ये पता कैसे चला कि ये कांस्टेंट ही होता है एरिया? बेटा वो एक टाइको ब्राये थे, उन्होंने 8 साल तक गैलीलियो का टेलीस्कोप लेके और उसकी रीडिंग नोट करी, उस डेटा को एनालाइज किया था केपलर ने. दैट्स व्हाई लॉज आर ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली ड्रिवन, बट इसको मैथमेटिकली अब हम प्रूव कर सकते हैं. कैसे? सपोज द अर्थ या कोई भी प्लैनेट का पोजीशन वेक्टर है r and it has a velocity v, so dt time में it will cover a p dt displacement. किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है अगर हम उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, if two adjacent side of any triangle is a and b, then area of that triangle is half into magnitude of a cross b. So similarly here that area vector will be half r cross v into dt. Divide by dt, so dA by dt will be half r cross v. अब ये कैसे पता कि ये कांस्टेंट है? इसमें ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दो. dA by dt is the rate of change of area जो इस लाइन ने कवर किया है in time t. It becomes r cross mv divided by 2m. R cross mv is angular momentum, and we saw that angular momentum is constant if torque is 0, and in the case of gravity the torque is always guaranteed to be 0. Reason being, forces are always passing through the same line
So net torque is 0. सन पे जो फोर्स लगेगा वो प्लैनेट की तरफ, प्लैनेट पे जो लगेगा वो सन की तरफ, दोनों फोर्सेस सेम लाइन में, so they will never be able to exert any torque. Forces passing through same line, no torque means angular momentum will be conserved. Angular momentum का फॉर्मूला था mv into r या फिर v into r perpendicular. So second law is based on conservation of angular momentum. Mass into velocity into r perpendicular, या mvr sin theta or r cross mv is constant. So when planet is closer, r perpendicular is less. R perpendicular is less. Then it will be, v will be more. Yes, sir. So when it is closest to the sun, planet has maximum speed, and that point is called perigee. On the planet's orbit, the point which is closest to the sun, that point is called perigee. It has the maximum speed. V max, because distance here is minimum, and when distance is maximum, then speed will be minimum. R max is a plus a. A is the semi-major axis, and a into e is the distance of e. क्या है? E is eccentricity of ellipse, root 1 minus e square by v square. Eccentricity decides the shape of the ellipse, how oval or how flat it is. A plus a, and r minimum will be a minus. Right. Then third law is based on the law of period. The square of time taken is proportional to k cube of semi-major axis. A is semi-major axis. When the orbit is circular, like for in the case of Earth, E is 0.016. And for circle E is 0. E को हम 0 कर देंगे तो A is equal to B बन जाएगा. इसलिए हम अर्थ की ऑर्बिट को ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट ले लेते हैं. Then t square is k times r cube, where r is the radius. So I sent one DPP, one question bank today on gravitation also. Question number 10. Which of the following is correct option? The time taken in traveling DAB is less than that of BCD. Is that correct? Time taken in traveling DAB is greater than that for BCD. Okay. When it is closer, then speed is more. So when it is closer, speed is more. DAB को क्रॉस करने में कम टाइम लगेगा as compared to A option.
Question number 22. The periods of moon rotation about Earth is nearly 21 days. If moon's mass were 2 for its present value, and other things remain unchanged. The period of moon's rotation will be. 22 के लिए हमें फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा. So now let's move to the second concept, which is the Newton's law. Universal law of gravitation. न्यूटन से पहले भी लॉ दिया था आर्यभट्ट ने, but he didn't give the formulation without mathematical formula. It's not supposed to be the. Originally given only for the point masses, but it can be applied for any spherically symmetrical masses as well, whether it is a hollow sphere, solid sphere, irrespective of the distance between them, how so close or how so far they are, we can still consider the whole mass of the sphere to be at its center. F is equal to G M1 M2 by R square. Right, where G is 6.67 into 10 to the power minus 11. तो ये law है. This law is applicable for not just for point masses. This is applicable for point mass or any spherical shape. Between two hollow sphere, between two solid sphere, between any spherical masses, it is always applicable. Right, and similarly, one hollow and one solid or both solid, we can also apply the same formula. As long as the body is spherical and uniformly distributed, we don't bother about the distance between them. वो distance जरूरी नहीं कि उनके size के comparison में बहुत बड़ी हो. Only then we will apply it. Even if they are touching each other, but the masses are perfectly symmetrical and uniformly distributed mass, then the whole mass will be assumed at the center. For multiple different masses system, we will apply the principle of sorption. So same masses always attract towards each other. So for a system of point masses, the net force will be calculated by using the principle of superposition, law of superposition. It is a vector sum of all the forces acting on a particle. The questions like the four particles, each of mass m, present on the corners of a square, which also lies on the circumference of a circle, as shown. If these particles are rotating on a circular path due to their mutual centripetal force, due to the net centripetal force, calculate the velocity. Find the velocity of each mass so that they can on a circular path. As shown.
करेक्ट. सो these two masses m and m. अभी क्या होगा, किसी भी एक पार्टिकल पे there will be three forces and the resultant of three forces will be acting toward the center, and that force, net force, will provide the required centripetal force. So this length will be r cos 45. R by root 2 is the side length of this square. These particles are moving on a circle such that they are able to rotate on the circular path due to their mutual gravitational pull only. No external force is applied. Right? So ये F1 और इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं. F1 is gm square. माइनस साइन लगाते हैं केवल वेक्टर लिखते टाइम. gm square by r by root 2 square, and same will be equal to the other force acting by the second particle. That become 2 gm square by r square. The force applied by the diagonally opposite mass F2 will be gm square upon 2r. Achha, sorry. It will become root 2r, no? This will be root 2r. This will also be root 2r. Hypotenuse is 2r. So gm square upon root 2r square. So gm square by 2r square is F1 on both the sides. F2 is gm square upon 2r square, gm square upon 4r square. So किसी भी एक पार्टिकल पे थ्री फोर्सेस लग रहे हैं, F1 और F1, these are in perpendicular direction. इन दोनों perpendicular forces का रिजल्टेंट आ जाएगा रूट 2 F1 और साथ में एक लग रहा है F2. Net force toward the center that will provide the required centripetal force. Is equal to root 2 F1 plus F2. F1 is gm square by 2r square, gm square by 2r square plus gm square upon 4r square. This is the force, and that force should be able to provide mv square by r. On the circular path, net force acting toward the center must be equal to mv square by r. So it becomes 2 root 2 plus 1 gm square by 4r square is equal to mv square by r. You can calculate the speed with which the particle has to move on the circle so that they continue moving with the same speed on the same circular path. Right. With this speed, each particle has to move. Only then they will be able to move on this circular path due to its own path. Very good. So similar questions are there in this TDP also. जैसे
This is the gravitation force between the multiple masses. Gravitation force हम किसी बड़ी body पे भी निकाल सकते हैं. So there is the Shell theorem. Shell theorem is applicable for hollow spherical shell. Inside a hollow spherical shell, there is no force, no gravity exists. Inside a hollow sphere, बाहर जब तक है तब तक तो same formula लगेगा जैसा कि एक point mass के लिए होता है. This is m1 and this is m2 for any point outside. So this is for a hollow spherical shell and a point mass. When point mass lies outside, center से distance है r. F is equal to g m1 m2 by r. When a point is outside. When this point lies inside, shell, yes, inside the shell, when a particle goes, तो उस particle पे हर एक direction से force लगेगा and the net force get cancelled out. So, अगर हम किसी भी shell के अंदर जाते हैं, किसी भी cavity में बना के उसके अंदर जाते हैं, एक particle को M2 को, it will not experience any force because it has masses surrounding in all the directions. So they all are attracting each other and they cancel out. Net force inside a spherical shell is always zero because that particle is attracted symmetrically from all the directions. Okay. So shell theorem को हम अप्लाई करेंगे अगर किसी सॉलिड स्फीयर के लिए भी फॉर फोर्स बिटवीन अ सॉलिड स्फीयर. तो ये जो पहला केस हमने अप्लाई किया, दिस इज द फोर्स बिटवीन अ पॉइंट मास एंड अ सॉलिड एंड अ hollow sphere. Point mass and hollow sphere. होलो स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पे फोर्स एग्जैक्टली सिमिलर फील होता है जैसा कि एक पॉइंट मास का. इनसाइड फोर्स बिकम जीरो फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन. नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम किसी सॉलिड स्फीयर के लिए कैलकुलेट करते हैं फोर्स फॉर अ सॉलिड स्फीयर एंड अ पॉइंट मास. तो सॉलिड स्फीयर के लिए भी अगर बाहर कहीं पे पॉइंट रखा है, then the whole mass will be assumed at the center of this sphere and the force will be same. We can assume the whole mass to be present at the center and it will be same, small r and capital R. Outside के लिए force is exactly similar to that of a point mass kept at the center. Inside के लिए, yes, we need to, for inside we have to change. Inside में हम जितना अंदर पहुंच जाएंगे, हम उतने पार्ट के शेल को पीछे छोड़ के आ चुके हैं. Like suppose in a solid sphere, if we are at this point, हम यहाँ से एक शेल बना सकते हैं and then we can break this whole thing into two parts. One is the mass which lies outside and the other is the mass which lies inside. बाहर वाले किसी भी मास की वजह से शेल पे फोर्स नहीं लगता है. So because of this outer surface, there will not be any force inside. ये आ गया M2 और ये आ गया M1 dash. शेल के अंदर when r is less than equal to capital R. Force acting between now these two particles if inside is, एक तो ये स्फीयर जो पूरा बड़ा था वो छोटा हो गया, हमें केवल m1 dash फोर्स लगेगा.
जो बाहर की तरफ स्फीयर है वो एक शेल की तरह काम कर रहा है और शेल की वजह से टोटल फोर्स इज 0. G m1 dash m2 upon r square. m1 dash क्या अंदर वाले का मास है. m1 dash will be mass density into volume. छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम 4 pi by 3 r cube. G substitute this value. So अभी हम क्या करते हैं, r square कट जाएगा and rho is the whole density. The density of this bigger sphere will be mass m1 divided by volume, which is 4 pi by 3 r cube. Substitute in this formula for force inside. किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर हमने r डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल रखा है पॉइंट मास, सो उस पे जो फोर्स लगेगा g into rho 4 pi by 3 r cube into m2 by r square. 4 pi by 3, 4 pi by 3 gone. सर आर स्क्वायर भी चला जाएगा ना. हाँ बेटा, सर आर स्क्वायर, क्या r square? सर आर क्यूब से वो भी कैंसिल हो जाएगा ना. हाँ हो गया हाँ. कैंसिल. यस. So inside force आ गया directly proportional to r, outside is inversely proportional to r square. Gm1 m2 by r cube. Solid sphere के अंदर force linearly increase होगा as we go away from the center. और मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड वाइज है, अगर वेक्टोरली बनाओगे तो अपोजिट आ जाएगा. क्यों? क्योंकि इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स. जब हम किसी पॉइंट से किसी भी मास से बाहर की तरफ फोर्स दिखाएंगे पोजीशन वेक्टर, देन फोर्स विल बी एग्जैक्टली अपोजिट. वेक्टर फॉर्म इट विल बी माइनस. सो सॉलिड स्फीयर के अंदर लिनियरली प्रोपोर्शनल, सरफेस पे मैक्सिमम, एंड देन अगेन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. सिमिलरली हॉलो स्फीयर में क्या था, अंदर 0 एंड बाहर सेम एज दैट ऑफ पॉइंट मास, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. शेल के अंदर ग्रेविटी नहीं होती. सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर हम पहुंच गए तो हमने उस स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. वो सॉलिड स्फीयर जो हमसे आगे है एंड द पोर्शन व्हिच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. ठीक है. आई थिंक बेस्ड ऑन दिस द इनिशियल पोर्शन ऑफ क्वेश्चन यू कैन सॉल्व कुछ, राइट? ठीक है. ओके, देन वी विल Yes, sir. कंटिन्यू टुमारो. ग्रेविटेशन पढ़ के आना. ग्रेविटेशन पुराना जितना भी कि मोस्टली थ्योरी बेस्ड है, तो वो वाला पार्ट हम जल्दी स्किप करके we will jump to the electric field and potential. Variation and expression due to gravity एक बार पढ़ लेना 11th की बुक से, इसमें ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है. Okay then, thank you. Okay, sir.